Hello everybody, a very good morning to all of you. This is Hrusikesh Sahu and welcome you all to class 9 Civics class. So before starting a new chapter, we have to recall that what we had discussed in our previous class. In our previous class, we had discussed about the office memorandum, about the appointment of the Mandal Commission and how the recommendation of the Mandal Commission became a law. So we had mostly focused on these topics and we had discussed all these topics in our previous class. So overall we can say we had discussed about the Mandal Commission. तो मंडल कमीशन क्यों अपॉइंटमेंट हुआ था, उस मंडल कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था, उस कमीशन को की रिकमेंडेशंस को कैसे लॉ में कन्वर्ट किया गया, कैसे लॉ बनाया गया, तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया था. तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा है दिस वाज द स्टोरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. तो वो एक स्टोरी के रिलेटेड था, वो स्टोरी के जरिए हमने वेरियस इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं वो हमने जस्ट उसके ऊपर फोकस किया था. एंड जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग हियर, तो यहां से वो मेन टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है. सो द मेन टॉपिक जो टॉपिक आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. सो एक कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत क्या है. जैसे तुम लोगों को पता होगा यहाँ पर तरह तरह का इंस्टीट्यूशंस काम करता है. Like parliament is an institution, president is an institution, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है. तो सवाल ये है कि व्हाट इज इंस्टीट्यूशन. Institution means one type of organization who performs various functions like who create, enforce and apply laws. But the thing is that why it is called as the political institution? Because there are several institutions working in a country. RBI, just take an example, that Reserve Bank of India is also an institution, but that institution is not called as political institution. Central Bureau of Investigation is also an institution, but that is not called as political institution. When we are using the word, when we are mostly focusing on the word political institution, that means we will discuss about a very little topic. We will focus on very little institution. So बहुत small institutions के बारे में, बहुत limited institutions के बारे में हम यहाँ पर discuss करेंगे. So mostly there are three major political institutions, that is parliament, that is which is also known as the legislature, executive and judiciary. So mostly हम इस चैप्टर में इसी तीनों political institutions के बारे में डिस्कस करेंगे. So let's start the topic. Governing a country involves various activities such as security, education, health, etc. तो हम एक कंट्री को शासन कर रहे हैं, एक कंट्री को रन कर रहे हैं, कोई मजाक नहीं चल रहा है. तो उस वजह से अगर एक कंट्री को चलाना है, सो वी हैव टू फोकस ऑन डिफरेंट इश्यूज. दैट मींस वी हैव टू फोकस whenever we are governing a country, we have to focus, we have to mainly focus on the security of the country, education, healthcare, transportation, communication. So mostly these issues, these things must be focused in a country when we are governing a country. And these activities are performed by various institutions, because a single person cannot alone run the country or govern the country. तो एक अकेले व्यक्ति, एक या ग्रुप ऑफ पीपल पूरे कंट्री को शासन करना ये उनके लिए पॉसिबल नहीं है. तो एक कंट्री को चलाने के लिए उसके सिक्योरिटी के ऊपर फोकस देना होता है, हेल्थ सिस्टम्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर. तो इतने सारे काम कोई अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है. सो दैट्स व्हाई these activities are performed by various institutions. Democratic government rests on different institutions to run the country. So as you know that India is a democratic country, and every democratic government rests on different institutions to run the country. Like several institutions are there, as I told you, mostly we will focus on three major political institutions, that is parliament or legislature, executive and judiciary. So let's have a look that some institutions in our country take decisions and implement them. Not only in our country but also in all over the world. Some institutions take decisions and some institutions are required to make laws, that which is known as parliament or legislature. तो जिसको हम parliament कहते हैं या legislature कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, to make the law or to legislate the law. तो कुछ ऐसे institutions होते हैं जो कि क्या करते हैं, which is also required to make the law or to legislate the law, and that institutions is known as the parliament or legislature.
Some institutions also take decision and implement them, like parliament and civil servants, and who are known as the executive. Just remember, recall about the office memorandum, as we saw that a secretary from the मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो था, उसकी उसी डिपार्टमेंट से एक सेक्रेटरी ने जो लेटर इशू किया था, तो वो सेक्रेटरी जो थे उनको सिविल सर्वेंट्स कहा जाता है, वो भी एक तरह का एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर्स हो, प्रेसिडेंट्स हो, सिविल सर्वेंट्स हो, वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और उनका काम क्या होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटीज ऑफ द सिविल सर्वेंट एंड द एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट द लॉ एंड टू इम्प्लीमेंट द लॉ। And another institutions also work to resolve the dispute. That means if any disputes arises between two citizens or between the government, between the central government and state government, so who will resolve the dispute? तो उस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कौन करेगी? सो उस डिस्प्यूट्स विल बी रिजॉल्व बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जो जुडिशियरी होता है, दैट जुडिशियरी विल रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट। सो उस जुडिशियरी क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट हमारा, अगर कोई दोनों सिटीजन्स के बीच में, दोनों लोगों के बीच में, या दोनों स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई लॉ को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइजेस करता है, तो उस समय में, उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। Working with institutions are not easy. It has a lot of rules and regulations. This can bind the hands of the leader. So वो कह रहा है, देखो, that working with institutions are not easy. It has lot of rules and regulation. That means we may be talking about the parliament, we may be talking about executives, we may be talking about the supreme courts. These institutions cannot take any decisions as per their own ways. तो वो अपने मर्जी से कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। वो इंस्टीट्यूशन जो भी काम करते हैं, तो उन लोगों को भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। Whenever these institutions are taking any decision, they have also following different kinds of rules and regulation, and in this way this can bind the hands of the leader. तो लीडर जो होते हैं, पार्लियामेंट के जो लीडर होते हैं, जिनको हम MP MLAs कहते हैं, एमएलएस, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होते हैं, आप लोगों को पता होगा, उनको एमएलएस कहा जाता है। और पार्लियामेंट की जो लीडर होते हैं उनको एमपी कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो। तो ये लोग चाहे अपने मर्जी से कुछ भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, उनको भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, कमिटीज एंड रूटीन्स। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? इंस्टीट्यूशंस मोस्टली इन्वॉल्व करते हैं मीटिंग। इंस्टीट्यूशन कोई भी डिसीजंस लेने से पहले वहां पर बहुत सारे मीटिंग्स होता है, कमिटीज की सेटअप किया जाता है, जैसे मैंने कहा कि वेरियस रूल्स और रेगुलेशंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। एंड ड्यू टू दिस ऑफन दिस लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। दैट मीन्स व्हेन इंस्टीट्यूशंस टेकिंग एनी डिसीजंस एट दैट सिचुएशन, they has to follow that a lots of rules and regulation, and when the institution follows that rules and regulation, then this often leads to delays and complications. दैट मीन्स वहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट होता है, जब डिसीजंस लेने के लिए डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, जो कि इंस्टीट्यूशन की डिसीजन मेकिंग बहुत डिले होता है और डिसीजन मेकिंग एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी बन जाता है। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, दैट देन इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? If political institutions are following several rules and regulations, and due to this lead to the delays in decision making and complicated in decision making process, then is it good to have political institutions? तो क्या political institutions होना जरूरी है? हम तो एक अकेला व्यक्ति भी कोई डिसीजंस ले सकता है, जैसे कि तुम लोगों ने नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर में हिटलर के बारे में पढ़ा होगा। हिटलर एक डिक्टेटर था जो अपने मर्जी से अपना डिसीजंस लेता था, तो एक अकेला आदमी भी तो डिसीजंस ले सकता है। यू मे थिंक दैट वन पर्सन शुड टेक all the decision, but it is against the spirit of democracy. एक अकेला व्यक्ति decisions ले सकता है, but if decisions are taken by a single person, that country cannot be called as a democratic country, and that decision is against the spirit of democracy. Because democracy में decisions लेने से पहले वो कह रहा है, देखो, जैसे कि institutions provide an opportunity for consultation and discussion which improves the quality of decision. Because maybe in a democratic country decision making processes may be delays, as it is the various institution following different kinds of rules and regulation, which leads to delay in decision making, and it creates a complicated situation. But the decisions taken by a democratic institutions is always as accepted by the people,
and it is a very qualitative decision. No one can mostly oppose that decision. तो उस decision को ज़्यादा लोग oppose नहीं करते हैं और most of the people accepted that decision, और जो decisions वहाँ पर लिया जाता है वो ज़्यादा qualitative decisions होता है. So in India, these are the three important political institutions. As I told you, legislature or parliament, it is the final authority for making laws in the country. तो हमारे countries में जैसे कि मैंने तुम्हें कहा, तीन सबसे important political institutions है. एक है legislature और parliament, जो कि हमारा countries में that is the legislature or parliament is the final authority for making laws in the country. Second one is the executive, but as I told you, executive is also divided into two parts or two groups, that is political executive and permanent executive. The prime minister, the cabinet minister, that all take all the important policy decisions, and they are called as the political executives. And permanent executives are the civil servants working together, are responsible for taking steps to implement the minister decision. तो मिनिस्टर की डिसीजन को जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जो सिविल सर्वेंट, उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा कोई लोगों के द्वारा लिमिटेड टाइम के लिए इलेक्टेड नहीं होते हैं, बल्कि गवर्नमेंट के द्वारा फुल टर्म के लिए उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है. तो उस वजह से उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहा जाता है. प्राइम मिनिस्टर की टर्म 5 इयर्स होता है. 5 इयर्स खत्म होने के बाद वो बदल जा सकते हैं. मिनिस्टर भी बदल सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बदल सकते हैं, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये एक लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, तो उस वजह से उनको परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है. एंड एट लास्ट, द लास्ट political institution, that is judiciary. Supreme Court is an institution where disputes between citizens and governments are finally settled. तो जैसे मैंने कहा कि अगर दोनों सिटीजन्स के बीच में या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स होता है, दैट डिस्प्यूट्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो वन टाइप ऑफ पॉलिटिकल institutions. So basically what we had discussed about in our present class or in our today's class, we had discussed about the needs of the political institutions and about the various political institutions. So यहाँ पर तुम्हें एक questions आ सकता है, you will get a questions in your annual exam that what is the need of political institutions. तो political institution का क्या जरूरी है, क्या जरूरत है, तो तुम वहाँ पर लिख सकते हो to make laws for the country, political institutions is also necessary. To implement the laws, political institutions are also necessary, like the executive body, president, prime minister, cabinet minister, civil servants. These institutions are also necessary to implement and execute the laws. And if any disturbances arises, if any conflict arises at that situation, judiciary is also an institution which is necessary to resolve the disputes. So ये क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आ सकता है, और ये सारे आंसर तुम जो कि क्वेश्चन के आंसर तुम एग्जाम में लिख सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.